Good morning, my dear wonderful students. Hope you're all having a wonderful day. This is Achal, your teacher and friend, welcoming you all to Silverline Books by Turning Point Publishing House. This is my Green World for Class 2, and we are taking up chapter number 11, that is different types of houses, right? We were doing unit 4, which includes food, shelter, and clothing, right? We studied about the food in the previous chapter, and in this chapter हम पढ़ेंगे shelter के बारे में, यानी different kinds of houses, right? So children, हमें एक घर, एक house क्यों चाहिए होता है? Yes, to live in, right? वो house हमें बहुत सारी चीजों से protect करता है, heat से, cold से, dust से, rain से, thieves से, animals say, right? So our house is our safe place. It is a place to live in. So we need a house to live in. A house protects us from rain, heat, cold, insects and wild animals. इन सब चीजों से हमारी रक्षा करता है, protection करता है. Different people live in different types of houses. और जो अलग-अलग type के people हैं, कुछ लोग movable houses में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो villagers होते हैं, they live in temporary houses, कच्चा houses, and cities people, they live in permanent houses, right? So different people, they live in different types of houses. Let's see what are the types of houses. They are of 3 types mainly. First one is permanent house, then we have temporary houses, and then the movable houses. Okay, so now let's study about these kinds of houses in detail. So firstly we have permanent houses. कैसे type के house होते हैं ये? These are houses that last for a long time. ये लंबे time तक सही रहते हैं, strong रहते हैं. They do not break down easily. They are not destroyed easily. So such houses which are strong and stay for a very long time are called permanent houses. Okay, see, this is a bungalow. This is also another house. These are permanent houses. They are very strong, right? बहुत strong होते हैं. किन चीजों से बनाए जाते हैं ये जो permanent houses हैं? They are made of bricks or stones, right? ईंटों से और पत्थरों से बनाए जाते हैं ये जो permanent houses हैं. Their roofs may be flat or sloping. इनकी जो छत होती है, it can either be flat, या तो flat हो सकती है या फिर sloping भी होती है, right? Sometimes the roofs are sloping, mostly in the areas where it snows. जहाँ पे snowfall होती है वहाँ पर roofs को sloping रखा जाता है जिससे कि वो snow slide down कर जाए, right? So their roofs may be flat or sloping, slanting. Flat roofs are made of concrete or stone tiles. जो flat roofs होती हैं, they are mostly made from concrete, right? Concrete यानी पत्थरों से बनी हुई होती है या फिर stone tiles को use करके वो flat छतें बनाई जाती हैं. And sloping roofs, जो slanting roofs होती हैं, वो किन से बनाई जाती हैं? They are made of tiles, tin और asbestos, right? Tiles, जैसे आपने टाइल्स देखी होंगी, उनको यूज करके रूफ्स बनाई जाती हैं. स्लैंटिंग टाइल्स, स्लैंटिंग रूफ्स टिन को यूज करके बनाई जाती हैं, मेटल होता है, या फिर एस्बेस्टॉस, राइट? एक फाइब्रस क्रिस्टल काइंड ऑफ नेचुरली अकरिंग मिनरल होता है एस्बेस्टॉस, उसको भी यूज करके ये जो स्लोपिंग रूफ्स हैं वो बनाई जाती हैं. To build a permanent house, we need bricks, cement, sand, wood, iron rods, stones, tiles, lime. So all these things are required to make a permanent house, right? These things make the house strong, right? So bricks, cement, mainly the things are bricks, cement, iron, wood, stones, right? All these things, sand, these are very important for making the permanent houses.
Now, children, a very important fact for you all. Rashtrapati Bhavan in New Delhi is the official residence of the President of India. So, President of India जो है वो कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में, न्यू दिल्ली में है ये राष्ट्रपति भवन, which is the official residence. जो भी हमारे president elect होते हैं वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, right? Now let's talk about the another type of house, that is temporary house. Temporary houses are those which do not last for a long time. ये इतने strong नहीं होते हैं और वो ज़्यादा time तक नहीं रहते. They are not very strong and they are made of wood. इन्हें लकड़ी से बनाया जाता है, बैम्बू से बनाया जाता है, मड से या फिर हैच से, राइट? बैम्बू स्टिक्स होती हैं, बैम्बू प्लांट की जो स्टेम्स होती हैं उनसे बनाया जाता है, जिसे बांस कहा जाता है, राइट? मड से यानी मिट्टी से बनाते हैं या फिर हैच यानी ड्राई ग्रास से जो कच्चा हाउसेस और द टेम्पररी हाउसेस आर बिल्ट. टू बिल्ड अ टेम्पररी हाउस वी नीड वुड, लकड़ी चाहिए हमें, बैम्बू चाहिए, we need mud, we need straw, that is the dry grass, but then we need palm leaves. Palm tree की जो leaves हैं वो भी roofs पर डाली जाती हैं, right? So all these things are required to make a temporary house, and a temporary house is not very strong and it does not stay good for a long time. Next type of houses, movable houses, right? ऐसे house जो एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट करे जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं, राइट? मूवेबल हाउसेस आर दोज व्हिच कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. क्या आप आपके जो परमानेंट हाउसेस हैं इनको आप शिफ्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह? नो, दे आर फिक्स्ड एट देयर प्लेस. सो देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ हाउसेस व्हिच कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अभी कौन से हाउसेस होते हैं? देयर इज a caravan. This is a caravan which is a wooden house made on wheels. ये wood से बना होता है और इसके नीचे wheels लगे होते हैं. So you can take it along with you wherever you go. Whenever you want to take a rest, you halt your vehicle. अपने vehicle को stop करके उसके अंदर पूरा house होता है. There is bed, there are sofas, tables, a small kitchen. Everything is there, whichever is there in a house. सब कुछ होता है and it is a house on wheels, we can say, right? Then some tribal people live in caravans wandering freely. कौन रहते हैं caravans में? जो tribal people हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह तक travel करते रहते हैं, right? So ऐसे लोग caravans में रहना पसंद करते हैं. Now let's talk about a tent. tent क्या होते हैं? A tent is made of कैनवस क्लॉथ. ये टेंट है और ये बहुत ही थिक क्लॉथ का बना होता है जिसको हम कैनवस क्लॉथ कहते हैं, राइट? इट कैन बी फिक्स्ड एंड रिमूव्ड इजीली. इसे बहुत इजीली जहां भी आप जाते हैं, सपोज आप कैंपिंग के लिए जाते हैं, राइट? तो आप इसको फिक्स कर सकते हैं एंड देन व्हेन यू हैव टू लीव दैट प्लेस आप इसे फोल्ड करते हैं और इसे अपने साथ कैरी कर इजीली ले जा सकते हैं. एंड अगेन यू कैन fix it wherever you want to stay for the night or you want to rest. So it can be fixed and removed easily. इसे लगाना और उतारना बहुत आसान होता है and it provides protection from rain. इसका जो कपड़ा होता है it is so thick कि ये पानी को अंदर नहीं आने देता. पानी को it does not allow the water to pass through it. So it protects you from the rain. Many scouts and soldiers live in tent for a short time. जो soldiers होते हैं या फिर जो scouts होते हैं, scouts कौन होते हैं? You can say some kids जो learn करते हैं how to live in a community for some fun. वो कोई organization को join कर लेते हैं. They learn the various ways of living, right? They love camping for fun also. Some people join these organizations and the people of that organization, those boys mainly, are known as scouts. So they all live in a tent for a short time. कम time के लिए ये लोग tents में रहते हैं and then when they move from that place, वो अपना tent अपने साथ ले जाते हैं.
A houseboat is a floating house. It is made of wood. अब एक houseboat क्या होती है? ये एक floating house होती है जो पानी में float करती है. It does not sink और इसे wood से बनाया जाता है. Right? It is found on Dal Lake in Kashmir. आप कश्मीर जाते हैं तो आपको डल लेक में houseboats मिलेंगी. In Kerala also there are lakes where you will get beautiful houseboats to live in. Right? So houseboats floating houses होते हैं जो पानी में float करते हैं, तैरते हैं. Right? This is a houseboat. A small activity for you children. Using magazines and newspapers, collect pictures of a stilt house, an igloo and a caravan. Right? So first of all, do you know what is a stilt house? Stilt house होता है जिसे sticks पर खड़ा किया जाता है. Bamboos होते हैं, उनको थोड़ा ग्राउंड से ऊपर बनाया जाता है. ग्राउंड उसको नीचे स्टिक्स से उसकी जो लेग्स होती हैं उसके ऊपर वो हाउस बना होता है. एंड मोस्टली ये बनाए जाते हैं जहाँ फ्लड्स यानी बाढ़ आने का डर होता है, कोस्टल एरियाज में where the water comes very easily, right? So to give protection इनको थोड़ा ऊंचाई पर बनाया जाता है. These are known as stilt houses. Then we have igloo. Igloo क्या होते हैं? जो जहाँ पे स्नो होती है बहुत ज्यादा, जैसे एंटार्क्टिका हो गया, आर्कटिक रीजन हो गए, वहां पर इग्लूज बनाए जाते हैं जो आइस से बनते हैं, स्नो ब्लॉक से बनाए जाते हैं. एंड caravans, I have already told you. So you have to collect pictures of some igloos, stilt houses and caravans from newspapers and magazines, right? So that was all for different kinds of shelter, right? Different kinds of housing we have read. So I hope you're all clear. Let's start with our exercise for this chapter, children. A part, fill in the blanks with the words given in the box. Certain words are given to us. These are clues and hints. इन्हें use करके हम इन blanks को fill करेंगे. Permanent houses are made of bricks or stones. Yes, they are made of bricks or stones. Number 2, roofs may be flat or sloping, right? They may be flat or sloping. Number 3, houses on wheels. तो wheels पर houses हैं, उन्हें क्या कहते हैं? We call them caravans. Number 4, sloping roofs are made of. जो sloping roofs हैं हम किससे बनाते हैं? Tiles से. Number 5, a houseboat is a dash house. So what kind of a house is a houseboat? Yes, it is a floating house. Then we have question number 6. Dash provides protection from the rain. Rain से हमें क्या चीज protect करती है? Canvas. Clear everyone? Great. Now in the B part we have been given certain pictures of the houses. हमें उन्हें identify करना है and we have to write their names in this space provided. Right? So see what kind of a house is this, children? If you look closely, you will see कि ये थोड़ा जमीन से ऊपर उठा हुआ है, sticks और ये जो bamboos हैं इन पर टिका हुआ है. So this is a stilt house, right? What kind of a house is this? Yes, this is a tent. This here you see is a house that has wheels. So a wooden house on wheels is known as a caravan. And this here is a big permanent house. We call it a bungalow. Clear everyone? All right. Let's see the next part, that is C part. Answer the following
questions. What is a permanent house? What is a permanent house, children? It is a strong house and it is made of bricks or stones. Right? Number 2, what is a temporary house? Temporary house क्या होते हैं? It is a house. It is not a strong house. And it is made of mud, bricks, bamboo, right? And straw. Clear, everyone? What are movable houses? Movable houses कौन से होते हैं? Houses that can be shifted from one place to another. Houses that can be shifted from one place to another are known as movable houses. Clear, everyone? All right. Now, children, we have a fun time activity. You have to name the building materials. Here you will see pictures of certain building materials. इन सब चीजों से houses बनाए जाते हैं, right? So हमें इनको identify करना है and we have to write their names. So what you see in the first picture, these are bamboos, right? Bamboos. Then what do you see here? These are cement. ये cement है जिससे permanent houses को बनाया जाता है. Cement bricks को stick करता है, right? और इसे strong बनाता है. This is cement. Then what kind of a building material is this? This is mud, right? What's this? This is straw. We can say this is thatch. And these are tiles. These are all building materials, right? So I hope, children, you have understood this chapter well. Different kinds of shelter, what building materials are used to make these different types of houses. So I'll see you in the next chapter with my next video. Till then, children, you all stay blessed and be very good children to your parents. Keep smiling. Bye, children. Have a good day.